5 में से एक औरत इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS से पीड़ित होती है। PCOS भारत में कई औरतों को अफेक्ट करता है और ये एक मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। हाय, मैं सानिया मिर्जा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर कामिनी का स्वागत कर रही हूँ, जो एक मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज वो हमें PCOS के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। PCOS के बारे में जानकारी बढ़ाने से कई औरतों को फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई गलत विचार हैं। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल मील PCOS पेशेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? Thank you, Sania. This is very relevant question. As we know that most of the PCOS persons, they are either obese or overweight. So the meal planning and the control portion, they are very crucial aspects of the PCOS management. A balanced meal with proteins, good fats, healthy fats and low glycemic index carbs, they help in maintaining the blood sugar levels, in reducing the insulin resistance as well as in maintaining the weight. It also helps in decreasing the inflammation associated with PCOS. Sanya, one should not eat while watching TV because or playing with the mobile, because while watching TV, they don't have control on their meals. They keep on eating anything. And ये आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए ये ओवरवेट हो जाते हैं, which further promotes the PCOS. These patients, they should avoid fried foods like French fries, banana chips, potato chips, etc. और processed foods and junk foods जिनमें added sugar and salt होता है, वो तो PCOS फीमेल्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बटर्स, मार्गरीन, हॉट बर्गर्स, लाइक हॉट डॉग्स, ये सब चीजें बिल्कुल भी उनको नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दे प्रमोट देयर वेट गेन एंड दे फर्दर एग्रेवेट देयर PCOS. So diet management is very important part in the management of PCOS. Thank you, Sania. थैंक यू डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं PCOS को मैनेज करने में फिजिकल एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? थैंक यू सानिया, दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन बिकॉज PCOS लेडीज़ में अकेले डाइट या अकेले मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द PCOS। इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ही वेट रिडक्शन की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी कंसीडर दैट 5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट रिडक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल in maintaining the blood sugar levels, in maintaining the BMI, as well as in correcting the symptoms of the PCOS. Because exercise, it releases endorphins and reduces the level of the testosterone. अब अगर हम बात करें कि हमें कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 250 minutes per week exercise of the moderate intensity and 150 minutes per week exercise of vigorous intensity or combination of both, along with muscle strengthening exercises like push-ups, sit-ups, etc. They are very helpful in patients of PCOS. Studies show that excessive training improves autonomic functions and thus helps in reducing the inflammation associated with PCOS. Vigorous intensity exercises, aerobic exercises, they reduce BMI and thus help in management of the PCOS. We recommend HIIT, that is high intensity interval training in such kind of patients like resistance bands, like burpees, like tuck-ups. These are very helpful. So lifestyle modification is considered to be one of the most important aspect of the patients of PCOS. थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल,
PCOS पेशेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेगुलरली चेक करने चाहिए? Sania, I think the monitoring of PCOS females, this is very, very important. But it depends at what age the patient is presenting. Suppose the patient is very young. Then, suppose unmarried girl, 16 to 17 years, coming to us with the menstrual irregularities. In such patients, the monitoring includes routine like BP, weight, BMI, blood sugar, and the most important is hormonal monitoring, so that we can manage the menstrual irregularities of these patients before they have hirsutism, acne or acanthosis. So that is one part. Now, if the patient of reproductive age is coming to us, she can also come in two ways. Either the menstrual irregularities along with infertility, patient is not conceiving, or patient has conceived. So, if patient is coming along with menstrual irregularities and unable to conceive, in such cases, along with the previously mentioned monitoring, we have to go for the ovulation, because such patients, they are infertile because PCOS patients, they don't ovulate. Now, if PCOS patient is conceived, she is pregnant, then we should monitor her from the point of view of abortions, because abortions are very, very common in patients of PCOS, and we should also monitor her from the point of view of GDM. Now, coming in general, if we talk about these patients, they are very much prone to have psychiatric problems like anxiety or depression because of obesity, because of acne, hirsutism and the acanthosis nigricans. So counseling of these patients is very important, first thing, and secondly, time to time the screening of their psychiatric problems should be done. I should say it should be mandatory, and later on in the later half the counseling about the problems, because we all know that the PCOS females, they are more prone to have hypertension, cardiovascular disease and the uterine cancers and diabetes type 2. So these patients should be time to time monitored for all these ailments, so that in future they should not have these life threatening problems and should be kept. Thank you, Sania. डॉक्टर, सभी औरतों के लिए ये एक सिंपल संदेश है कि मील, मूवमेंट एंड मॉनिटरिंग PCOS को मैनेज करने में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर कामिनी, आपके वैल्यूएबल टिप्स के लिए जो PCOS को अच्छी तरह से मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। मैं खुद एक एथलीट हूँ और मैं समझती हूँ कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक हेल्थी फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। आओ मिलकर इस सोच को बदलें, जानकारी बढ़ाएं और इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देकर अच्छी सेहत और खुशी की ओर बढ़ें।